So Madalsa, welcome to Times of India first of all. Thank you so much. Thank you. And tell us something about your TV debut. Are you enjoying? I'm sure you must have seen the first episode and got reactions. Yes. So how's it going? Well, it's been amazing. It's been such an amazing ride so far, and I'm sure it's just going to keep getting better and better. Well, पहला episode देखा, I was really excited because, like you know, it's my TV debut. तो काफी एक्साइटमेंट है, काफी एक्सपेक्टेशंस है, और लॉकडाउन के दौरान हमने जो शूटिंग की है, जो हम कर रहे हैं अभी भी, सो दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज इन इट्स ओन वे. तो उसे ओवरकम करके वी आर स्टिल शूटिंग एंड वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, एंड द एपिसोड टचवुड आई फील इज कमिंग आउट वेरी वेल, एंड so far the response that we're getting also is very positive, so looking forward to more. It's just the third episode today. आगे तो it's a long journey. The story is quite touching and emotional कि कैसे एक होम मेकर को हमेशा साइडलाइन किया जाता है, उनकी अहमियत लाइफ में नहीं समझी जाती, जबकि पूरे घर को वो चलाते हैं. So what was the your reason to accept the show? Well, the first and the foremost reason was that it's a Rajan Shahi show. So yes, there's no way I'm going to miss that opportunity. And secondly, definitely इसकी कहानी, and हमारे director sir Romesh sir, he is brilliant, and to be working with Rajan Shahi sir and Romesh sir and the entire team, ये अपने आप में it's a very big thing, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है. तो to get this opportunity, it's an honor. So, and plus again, the plus point is that the story is so touching, and I think it's a very relatable plot. ये ऐसी कहानी है जो कि हर एक औरत से रिलेट कर सकती है, not just women, you know. ये पूरी फैमिली की कहानी, it's a journey of an entire family. Right. So, it's very relatable, and जब लोग इसे देखेंगे तो definitely अपने आप को relate करेंगे in many ways. तो ऐसी कहानी, to be a part of such a beautiful story, and also जो मेरा रोल है, it has so many different shades to play. तो मुझे मौका मिल रहा है कि not just one particular character that I have to do, जैसे कि अगर कोई girl next door का रोल है तो I'm just doing that. But इसमें there are so many layers, there are so many different kind of shades that Kavya gets to play. So if I get that opportunity as an actor, I feel very satisfied firstly. तो इसीलिए this was a huge cherry on top for me. So these are the reasons why I just didn't think, and I just wanted to go ahead with this. So from films to TV, you know, this transition, how easy or difficult was it for you? Because जब usually एक mindset होता है, when you're doing films, you don't want to enter the TV space, ऐसे काफी actors सोचते हैं, you know. So what was your thinking when you were offered the show, and why you wanted to do TV? Well, I honestly feel, I don't know, I wouldn't know what other actors probably feel about the situation, but I think that TV these days is a vast medium. मुझे लगता है कि जो exposure हमें TV में मिलता है, because you're on screen every day, है ना? So people are looking at you, they're seeing your performance, you get a chance to perform, and it's like your daily dose of entertainment. I feel like, you know, like there's a difference between, a thin line between films and television. जैसे कि TV को हम कह सकते हैं, it's like your newspaper. You get your daily dose of information, your entertainment रोज आता है आपके पास. And films are like beautiful records, which are like books in the library, which you can see and you can preserve and you can watch them again. तो इनके दोनों की अपना charm है, films का and television का. But TV being a medium which is so accessible to the entire world. And because, like I said, you're getting to perform every day, so that makes you definitely, it gives you a chance to keep brushing on your acting skills. And आप हर एक household में जाते हो, जहाँ आपका serial लोग देखते हैं, you are being watched daily. So I think that's a very good opportunity, and there is no difference, I think, between films or television according to me. If anything, I feel films has definitely a wider reach these days. So definitely it was a bang on thing to do, to enter into television. But wasn't there any apprehension in mind, because you are a movie star and you know you want to get onto television? कोई back of the mind एक apprehension था कि मुझे करना चाहिए या नहीं? Is it too early in my career to do TV?
एंड इसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूपाली गांगुली इज प्लेइंग द सेंट्रल पार्ट, यू नो, स्टोरी उनके इर्द गिर्द बुनी गई है, एंड you guys are playing one of the important characters of her life, you know. So true, कोई very back true. of the mind एक apprehension नहीं था, I am a movie star and you know why am I doing it at this juncture of my career. Well, I honestly feel कि not just as an actor, but अगर life में किसी का attitude ऐसा हो जाता है कि I am at this level and why will I do this or why will I do that? I think anything which excites you, may it be a film, may it be TV, may it be a commercial, may it be um, a brand endorsement, may it be anything. But if it excites you, I think you should do it. Anybody, for instance, because until and unless anything is not going to excite you, आप पैशनेटली वो चीज कर ही नहीं पाएंगे. तो जब काव्या का रोल मेरे पास आया, जब मैंने पूरी कहानी सुनी, so I was completely sold because जैसे कि the story is definitely अनुपमा की कहानी है. It revolves around her, about her journey and her feelings, what she goes through in life. But again, all those things are not going to be possible if there are not characters. I mean, not just characters, but also the involvement of people who affect our life. तो इसी तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, हम सबकी जर्नी आगे बढ़ती है. तो इट्स द ग्रोथ ऑफ एन एंटायर सीरियल ऑन द होल, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर रोल. तो इसीलिए द काव्या का जो किरदार है, इट्स वेरी एसेंशियल, इट्स एन इम्पोर्टेंट की जिससे कहानी आगे बढ़ती है, जिससे सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कंबाइनली, यू नो, यू कैन गेट सो मच टू सी व्हिच इज हैपनिंग इन द शो. ना जब आप देखेंगे यू विल रियलाइज दैट देयर इज सो मच हैपनिंग एंड इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग विद वन कैरेक्टर, इट्स हैपनिंग around everybody. So this really excited me and I don't have any inhibitions, nor did I had like पहले भी मुझे कभी ऐसा कोई inhibition नहीं था कि if I'm doing films, why will I do TV now, maybe I can do it later. I don't think so. So I just thought that it's the right time, it was the right opportunity, and just that's what worked for me, being the right opportunity and being so excited about the role. तो इसीलिए I just thought that it's the right time for me. And जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ज़्यादा complications होते हैं. एक ही बारी में जो दिमाग में सही feeling आती है, I think one should just go with that. So that's what I did personally. And how has been TV, you know, working in TV space for you? Because you are used to working in Bollywood, जिसका अपना एक तरीका होता है काम करने का. You know, आपके इतने days allotted होते हैं जो आप shooting कर देते हो और वो फिल्म रैप अप हो जाती है. बट टीवी अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से, यू नो, शूटिंग हैज रिज्यूम, तो यू आर शूटिंग फॉर 8 hours और मे बी 10 hours. बट जब रेगुलर शूट होता है तो कभी कभी डेडलाइंस के लिए यू एंड अप वर्किंग, यू नो, 16 hours, 17 hours, 18 hours. So TV, how much are you liking, enjoying, because it's a very taxing medium. This was one thing जिसके लिए mentally prepare होना पड़ा था. Because जैसे फिल्में हम करते हैं तो we have to give a certain amount of days. उसके बाद फिर आप free हो जाते हो till you want to take up your next venture, of course. But TV में, of course, touch wood, till the show is running, you have to be on your toes. You have to be active. ऐसा नहीं है कि you want to take a holiday तो you can take a holiday, and you don't want to, you don't feel like going on set, so आप अपना delay कर सकते हो call time. You can't do those things. So इसके लिए I was preparing myself and मैंने बस सोच लिया एक बार करना है तो करना है, full out होके करना है. So I didn't want to get into the zone of thinking कि oh my god it's gonna be so hectic. It is very hectic, no doubt about that. But I just wanted to enter and just not think about how hectic it's going to be. अभी तो lockdown है and trust me, जो भी precautions वगैरह set पर लिए जा रहे हैं, it's so good and जितना मैंने सोचा था honestly उससे कई ज़्यादा provisions किए गए हैं for all the actors, for the entire crew. तो you feel very safe. जितना safe हम अपने घर पे feel करते हैं, honestly we are feeling as safe as our own home on the set also. So that's fine for me. I'm ready to face the challenge of a hectic schedule ahead of me. It's okay. But how difficult or easy was it to convince your family, Madalsa? Because you know, सारे loved ones यही चाहेंगे कि अभी फिलहाल के situation में हमारा प्यारा कोई भी घर के बाहर ना निकले, because you never know, ऐसे लोग कैरी कर रहे हैं वायरस जिनके पास symptoms ही नहीं है. So it is very difficult. पहले ऐसा होता था कि you know you are not taking permission, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, but कहीं ना कहीं now अभी situation ऐसा आ गया that you have to consider your family also, because you will be coming back to them. So how difficult or easy was it for you to convince your family to let you go out and work?
सो जैसे ही ऑफर मेरे पास आया एंड आई वाज like I said, like my family has been very supportive when it comes to my work. तो जब मैंने कहा उन्हें कि this is one show which is coming my way and it requires me to shoot अभी during lockdown, so what should I do about it? तो my family immediately उन्होंने मुझे सिर्फ यही पूछा कि are you okay with it? Do you like the role? Do you like the subject? आपको character, आपको अपना role पसंद है? आपको करना है? You want to do this? And I just said yes, I want to do this. तो मगर मेरी family ने मुझे कहा कि there are certain guidelines which you have to follow, certain protocols which you need to take, and more than anybody else, we ourselves are responsible for our own safety. I know it's so dangerous. I know it's scary. I know the situation out there. अभी भी it's not easy at all. बाहर जाते ही डर लगता है, बहुत डर लगता है. Set पर भी you feel, it's always at the back of your head. कि नहीं कि कुछ भी आप हाथ लगा रहे हो तो प्लीज सैनिटाइज हो जाओ जल्दी से. एंड सेट्स भी जो हमारे मेकअप रूम्स है वो हर 2-2 घंटे में सैनिटाइज होते हैं. तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तब हमें रियलाइज होता रहता है यू कॉन्स्टेंटली हैमर्ड दैट ये सारी चीजें आपको करनी है. दिस इज द न्यू वे ऑफ लाइफ नाउ. वन हैज टू टेक दीज मेजर्स टू इवन इट्स अ डे टू डे डेली बेसिस पर हमें अभी ऐसे ही रहना है जब तक कि वैक्सीन नहीं निकल जाता है या इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं आ जाता. राइट. So I am doing all that, and honestly, my family they trust me, and they think that they know that I'm going to, of course, take care of myself. And when it comes to my family safety, uske aage there is nothing more important than family safety. So keeping ourselves safe and keeping our hygiene in place is our absolute priority on set. जब बिफोर वर्किंग बिफोर शूटिंग ऑल्सो हर चीज से पहले हम यही देखते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं. अदरवाइज वी डोंट स्टार्ट शूटिंग. भले शूट में थोड़ा देर हो जाए या शॉट में थोड़ा और टाइम लगे, दैट्स ऑल राइट. बट एज फार एज एवरीथिंग इज बीइंग कंडक्टेड सेफली, दैट्स व्हाट मैटर्स. सो इवन आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट एज मच एज पॉसिबल. आपकी मॉम ने भी टीवी थोड़ा बहुत किया हुआ है एंड एंड मिथुन दा को भी हमने टीवी में काम करते हुए देखा. ही हैज बीन फेस ऑफ अ रियलिटी शो. तब क्या आप वेंचर कर रहे थे, आप फॉरे कर रहे थे, तो क्या किसी तरीके का आपने उनसे टिप्स लिया या उनके साथ शेयर किया दैट यू हैव बीन ऑफर्ड दिस रोल एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड यू गो अहेड एंड डू टीवी? टीवी की हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में. एंड मिथुन डैड ने मुझे शुरू से एनकरेज किया था कि इफ यू थिंक यू गेट समथिंग रियली गुड इन टेलीविजन, समथिंग पाथ ब्रेकिंग जो आपके करियर के लिए अच्छा है, जो आप करना चाहो, सो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेस किए थे मेरे व्यूज ऑन टेलीविजन, मिथुन डैड के सेम व्यूज है बिल्कुल. बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ DID उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि how vast of a medium it is and कितना स्कोप होता है टेलीविजन का. तो वो सुन के definitely that motivated me a lot and that helped me to make my decisions. तो मिथुन डैड ने मुझे हमेशा से टीवी में काफी सपोर्ट किया, encourage किया है that I should, if anything really, like I said, good comes my way. And hearing to everything that he had to say, I really wanted to go ahead with it. And even regarding lockdown situation circumstance जैसा है, बिल्कुल अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है. That's the bottom line, तो बस वो as far as we all follow that, तब तक that is what our family also advises us to do all this. And what all you did during lockdown? How did you make this moment special for you? Because ये बार-बार आने वाला टाइम नहीं है, इसके अपने बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ एडवांटेज भी है कि जो हम फैमिली के साथ अपना टाइम बिताना भूल गए थे, वो कहीं ना कहीं इस ब्रेक की वजह से वी आर फोर्स्ड टू स्पेंड टाइम विद देम. So what all? That's a good one. Yeah, we are forced to spend time. I like it how you said that. Yes. Well, definitely. Because not forced wale pe definitely, but I mean it brings the family together because otherwise day to day life में हम इतने busy हो जाते हैं कि उतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता जितना कि हम करना चाहते हैं, तो इस 4 महीने में आई थिंक अपनी फैमिली के साथ I've definitely gotten much more closer. और काफी चीजें की जो मैं शायद पहले नहीं करती थी, काफी चीजें एक्सपेरिमेंट की अपनी लाइफ के साथ जो मैं पहले नहीं करती थी. I had so much time
तो I started doing my guitar lessons. बहुत टाइम से मेरी लाइफ में I had this ड्रीम ही बोल सकते हैं एक तरह से, that मैं गिटार सीखना चाहती थी. मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रही थी. बट अब लॉकडाउन में because there was nothing much to do, so I thought let me do that. So I started doing guitar, and then I started catching up with my shows. There are so much, a lot of beautiful, amazing content right out there on so many OTT platforms. Right, true. तो वो सब देखना शुरू किया. I try to brush on my cooking skills and playing with my pets because हमारे पास घर पे we have a lot of pets here. तो उनके साथ time spend किया. So touch wood, the lockdown went down very smoothly. ऐसा नहीं लगा कि अरे घर पे हैं. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. आप और मीमो दोनों काम करते हैं, तो जब आप लोग काम करते हो तो एक साथ टाइम बिताना तो बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होंगे, आप भी प्रोजेक्ट्स में बिजी होंगे. काफी ऐसा मौका भी होता होगा कि आप दोनों शायद कुछ दिनों तक अपने एक दूसरे को देख भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी हो. इस लॉकडाउन का कितना सही इस्तेमाल किया आपने कपल टाइम बिताने के लिए, मी टाइम अपने पार्टनर के साथ? It was very therapeutic, I can say. क्योंकि the more time, obviously, the more time one spends with each other, there is a lot more that we discover about each other, and that's an endless journey. I think बहुत सालों के ऐसा लगता है कि you are still knowing somebody, you are never close to knowing someone perfectly. तो definitely journey बहुत अच्छा रहा है, and एक दूसरे को और जानने का मौका मिला, and एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया. So काफी चीजें हैं जो as a couple you get to work on so many things on a daily basis. It's so many small things, so वो सारी छोटी छोटी चीजों पर काम करने के लिए you need the time for each other. So this was like a really good break, and I'm sure we both made the best out of this time with each other, and we've taken back a lot of good things that we've learned about each other. So that's going to help us definitely. What was his reaction when he saw you in Anupama? आज ही, in fact, today was my entry in the show. Third episode था. So I was so anxious and I was waiting कि मैं set पर थी. I was waiting for him to call me and tell me कि उन्हें कैसा लगा. But touch wood, his reaction was nice and he really liked it. और getting his feedback it meant the world to me. So when I heard the things which he had to say about me, I was feeling so happy and I was feeling content. चलो ठीक है कि मैंने जो काम किया, it's come across the way I wanted it to come across. So उनका reaction बहुत अच्छा था, touch wood, and I hope it continues like this. मदलसा, काफी बार ऐसा होता है कि टेलीविजन का जैसे आपने बोला कि काफी सारे फायदे भी हैं कि आप घर घर तक पहुंचते हो. जो पॉपुलैरिटी आपको टेलीविजन दिलाता है, अगर आपका शो क्लिक हो गया तो वो शायद एक फिल्म भी ना दिला सके जितनी एक पॉपुलैरिटी एक टेलीविजन शो दिलाता है. बट उसके ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि काफी बार जब एक सेट ऑफ फॉर्मूला टीवी का चल जाता है तो लोग उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं. इफ देयर इज there's a Dayan or Ichhadari Nagin show which is a huge hit, so people start replicating it और वो उसी लाइंस पे बना देते हैं. So now that you have entered that TV space, Anupama is a great script. देख के लग रहा है कि it's a great cast and ensemble cast and great script and everything is nice. But are you open to doing that shows also, जो Ichhadari, Nagin, Dayan, उस genre, that fall into that genre? जैसा मैंने कहा कि मुझे ये रोल एक्साइट किया तो आई जस्ट वेंट फॉर इट. अगर मुझे वो रोल्स भी एक्साइट करेंगे जितना करना चाहिए, then I will definitely. I don't have any even before TV. I never had any set roles in my mind कि नहीं मैं यही करूँगी अगर ये नहीं करूँगी. So I think anything जो मुझे लगता है कि जिसमें मैं as an actor अपना अच्छा input दे सकती हूँ, जिसमें मैं uncomfortable feel ना करूँ, जिसमें मुझे ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन आंसर ना करना पड़े, so that thing is easy for me to say yes to. So आगे जाके also अगर इस टाइप के रोल्स जैसा आपने मेंशन किया, which are also a lot of performance oriented, इसमें there is so much energy that goes in, to playing every emotion. So if something like this, definitely I will of course listen to the entire story, and if it excites me, then why not? I don't think I should have any barriers. I will go for it if it excites me.
And what about reality shows? Are you keen on doing them? I think reality shows are fun. Reality shows are so quick and they're so spontaneous because ऐसा नहीं है कि it will go on for a long time and you have to commit for a longer time. It's so fast because I remember I had done one जैसे कि Fear Factor के जो shows होते हैं वैसा एक साउथ इंडिया में तेलुगु में मैंने किया था सुपर 2. So that was also yes, absolutely right. Yes, ETV Telugu. तो that was a reality show again, just like खतरों के खिलाड़ी. बहुत मजा आया था. That was one of the best experiences of my life when it comes to adventure and thrill. तो I think reality life is a lot of spontaneity है उसमें. So अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर definitely I would love to do a reality show depending on what it is about. What about Big Boss? I don't know yet. Definitely अगर ऐसा कुछ आएगा तब सोचूंगी. अब से सोचना doesn't make sense because when something comes your way then you can शांत दिमाग से आप सोच सकते हो. So if Big Boss comes my way, I will think about it. Why not? It makes you overnight. You're everywhere. It gives you so much of exposure, so much of reach again. Because it's a fantastic show, and most importantly, you need a lot of patience. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि you can just go और वहाँ पे रह लोगे. हाँ ठीक है हो जाएगा. No, जो patience चाहिए, जो level of patience चाहिए उसमें, it's commendable. And I think hats off to every contestant who has survived in the Big Boss home. It's not easy. It's not at all easy. And thank you so much for taking out time for us. Thank you, Vijaya. Thank you so much. And all the best for the show. Hope you have a rocking run on television. Yeah, hoping for the best. Yes.